Good morning, all. Then we will start our last lecture of first unit. Today we will finish our first unit. So, in previous lecture, we have discussed about some kind of concepts like class, structure, what is the difference between class and structure, okay? Or what is the object and what is the behavior of objects. These all things we were study in previous lecture, and then after that in this way we will discuss about the member functions of class in outside, or we can say also define in inside in the class. So these kind of things we have to discuss in our today's lecture. And with these all member functions, some of special kind of functions also we will discuss, like inline function, or we can say array of objects, and these kind of some things we will discuss in today's upcoming lecture. So these are the content of today's lecture. First we will discuss about inline function, then defining member functions in the class, member functions as inside the body of class and outside of the class. And then we will discuss about the outside functions as inline, है ना? Or after that we will discuss about accessing member functions within the class, and then last topic will be array of the object. So we will start without wasting the time. So first we need to discuss about inline function. Before inline function, you need to revise your general function also, because of when you know about the general function, or you will know about all execution process of general function, then you can differentiate between inline function and your general function. Our inline function is mainly used for increase the execution speed of the program. We need to execute some speedily. That's why we need the keyword inline, है ना? Inline यूज करने का only single हमारा यहाँ पे फंडा रहेगा, that will be the increase execution speed of the program. ठीक है, ओनली हम प्रोग्राम की स्पीड को, एग्जीक्यूशन स्पीड को बढ़ाने के लिए यूज कर रहे हैं. सो इफ यू टॉक अबाउट द जनरल फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन की अगर हम बात करें, देन यू ऑलरेडी, यस सर, एग्जीक्यूशन टाइम को इंक्रीज करना और एग्जीक्यूशन स्पीड को इंक्रीज करना सेम थोड़ा ना है. एग्जीक्यूशन स्पीड तो अपन इंक्रीज करना चाहते हैं, बट एग्जीक्यूशन टाइम तो हम कम ही करना चाहेंगे ना. बिल्कुल, एग्जीक्यूशन स्पीड इंक्रीज करेंगे हम तब टाइम कम लगेगा. तो यहाँ पे टू इंक्रीज एग्जीक्यूशन टाइम क्यों लिख रखा है? मतलब इट विल बी दैट टाइपिंग मिस्टेक. इसको आप टाइम थोड़ा सा आई थिंक इसमें लिखने में सेंटेंस में गलती है, बट हियर वी इंक्रीज द स्पीड, नॉट इंक्रीज द टाइम, है ना? एग्जीक्यूशन टाइम इसको लिख दिया गया इन रेफरेंस ऑफ स्पीड, है ना? इसलिए मैंने आपको जो बताया वो एक्चुअली स्पीड बताया है ना? दैट विल बी जस्ट, that term is represent just speed of the program. एग्जीक्यूशन टाइम यहाँ पे हमारा जो है वो स्पीड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली लेस ही होगा, है ना? ओके, सो वी नीड टू इंक्रीज आवर execution speed of the program. So in general or in normal function,
we have follow some kind of steps like first we need to call the function. At the time of call, we should here calculate the address of instruction that will be stored immediately, or we can say the call statement. Whenever we call the function, there will be some kind of address calculations will be performed. क्योंकि जब आप कॉल करोगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअली हमारा फंक्शन बॉडी जो है वो है कहाँ पे, उसमें जो आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, उसमें जो पैरामीटर्स दे रहे हो, वो मेमोरी के अंदर कहाँ स्पेस ले रहे हो. सो वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इज memory calculations, address calculations, and then load the function. ठीक है, उस फंक्शन को आप मेनली लोड करोगे, ठीक है, मेमोरी के अंदर, क्योंकि तभी तो आपका फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, है ना. देखो, एक हमारी एग्जीक्यूशन मेमोरी होती है और एक हमारी स्टोरेज मेमोरी होती है, बोथ आर डिफरेंट. Okay, storage memory means we can say the variables take space for store some kind of information or data. And when we talk about the execution memory, that will be the memory used by the execution process of the program. Okay, so after the calling, we need to load that particular function in execution area of the memory, है ना, जहाँ पे instructions को हम execute करते हैं. Then copy arguments values, है ना, इस टाइप का, जैसे मान लो function है that will be sum, like here two values like int a, है ना, a की ले लेते हैं हम. So there will be the value of a we take in x, है ना, और जहाँ पे हम फंक्शन कॉल करेंगे वहाँ पे भी हम कुछ वैल्यू इसकी देंगे, जस्ट लाइक सम 5. Okay, so whenever we call the function, first the cursor move on that and calculate the address of the argument a, and load that particular function in execution instructions, with execution instructions, and then the value transfer in argument a, that will be the 5, and then 5 is copied in these particular variables that are defined in that particular function. And then what is we next jumps to the memory location to the called function. ठीक है, तो उस मेमोरी फंक्शन की लोकेशन पे हम जाएंगे, एग्जीक्यूट द फंक्शन कोड, फंक्शन के कोड को एग्जीक्यूट करेंगे जो भी फंक्शन के अंदर बॉडी के अंदर लिखा गया है, एंड देन रिटर्न स्टेटमेंट जो है उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे लास्ट में कुछ रिजल्ट रिटर्न करने के लिए. तो रिटर्न भी आपका क्या करेगा, रिटर्न गो मस्ट ऑन द calling location, and that will be store some value at particular location given by the program. So there will be the 7 steps we have to follow for a normal program. Okay, then what is the difference when we add the keyword inline? What will be the changed scenario? Firstly, we will discuss about that inline function is mainly used for increasing speed of the execution speed of the program, and we can say it reduce the function call overhead. फंक्शन कॉल ओवरहेड मतलब फंक्शन कॉलिंग के टाइम जो भी कैलकुलेशंस की जाती है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है एग्जीक्यूशन टाइम. जब कंपाइल्ड प्रोग्राम को जब कंपाइल किया जाएगा तभी वहाँ पे सब कुछ
पहले से कैलकुलेट करके छोड़ दिया जाएगा. There is no need to any kind of calculation performed at the execution time. है ना? We will take a live demo also for this inline function, and we will learn about the whole functionality of inline functions. We can say there will be the keyword inline we have to use with the function, and after using the inline keyword, your compiler replace the function call statement with the function code. It means जैसे यहाँ पे आपने sum को call किया ना, तो अगर यहाँ पे आप inline लिखते हो, if you add inline keyword here, then the particular code of the program will be inserted by the compiler at compile time here. यानी यहाँ पे आपका पूरे फंक्शन का कोड ही डाल दिया जाएगा. So you don't need to move from here to here, or we don't need to copy from the value to in arguments, or we not required these kind of function performing. All these operations are needless. So compiler does not have to jump another location. है ना? कहीं भी जंप करने की रिक्वायरमेंट हमें ही नहीं रहेगी एग्जीक्यूशन टाइम. बट देयर इज ए प्रॉब्लम. You can use inline keyword only with small functions, not with large functions, or we can say collection of large codes we can't use. There will be the limitation. If you use with the big functions or large functions, then that particular function is treated as normal function. अगर आपने inline keyword use भी कर लिया किसी बड़े function के साथ, तो वो compiler automatically उसको फिर normal function की तरह ही treat करेगा. वो inline की तरह use नहीं कर पाएंगे. Syntax, we have only add the keyword inline. बाकी सब कुछ normal function की तरह ही रहने वाला. So we will take first the demo. Inline demo. Okay. So these are some theoretical things about inline function. We already discussed these, and that is a simple code, and there will be a function with name cube that will be take a one argument and return type is int, and we already add inline keyword with this particular function, and the return is the cube of the particular value. Okay, so in main function we call that function here. Okay, so we will take the instruction by instruction compilation. That will be the function declared with inline keyword. That will be the calling of the function, and compiler replace that particular call by using the body of the function. तो किस प्रकार से देखो करेगा ये आपकी फंक्शन मेनली फंक्शन है, और इसकी बॉडी जो है ये वाली है. तो ये नम आर्ग्यूमेंट है, तो यहाँ पे हमने एस 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 की जगह ये नम रख दिया है ना. दैट विल बी द. ये हमने नम क्यों रखा, क्योंकि जहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया था ना, देखो मैं आपको बताता हूँ. हियर क्यूब ब्रैकेट में क्या है, नम. ठीक है, तो इस नम की जो वैल्यू देंगे वो एस के पास जाएगी, और यहाँ पे एज ए नम इसको ट्रीट किया जाएगा. यू कैन सी वंस अगेन. ठीक है, ये कोड है.
एस की जगह नम गया, ये सारे एस जो है वो वेरिएबल नम से रिप्लेस हो गए और ये एज इट इज यहाँ पे कॉपी हो गया. सो द बॉडी ऑफ द inline function will be perform the operation at the place of calling the function. अब हमें इस फंक्शन को कॉल करने की जरूरत नहीं जब हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे होंगे. Now the execute function main. So first of the num variable, and the variable takes space in memory, and then we need to enter the value, and we can say the value is entered like we will take we can say that is the 5. Okay, so 5 stored in the location of num variable, and now the instruction executed this. अब यहाँ पे अगर नॉर्मल फंक्शन होता तो हमें कॉल करना पड़ता है इसको, बट ये इनलाइन है इसलिए कंपाइलर ने पहले से इसका कोड जो है वो यहाँ पे इंसर्ट कर दिया. तो num will be 5, num will be 5, num will be 5, and the calculation of these is 125, and 125 is represented as the result. Okay, so that will be the inline function process. Okay, now we will move on the next slide. That will be the defining member functions. Member functions we already discussed in previous lecture. What is the member functions or what is the data members? We can say the variables declared in the class are known as data members, and the functions defined in the class will be known as member functions. So here we categorized in two categories these member functions, like outside the class definition. According to definitions, there are dividation uh, outside the class and inside the class. You can make functions inside the class and outside the class. है ना? Both ways you have to available. But we can say uh, in both cases function body is identical. It means function body is same. There is no change. आप चाहे फंक्शन क्लास के अंदर बनाओ चाहे फंक्शन क्लास के बाहर बनाओ, there is no change in function body. Only the change is function header. ठीक है, फंक्शन हेडर जो होगा वो एक्चुअली डिफरेंट होगा. सो यहाँ पे क्या डिफरेंस होगा वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर देखेंगे. मेंबर फंक्शन इनसाइड क्लास. फर्स्ट वी टॉक अबाउट द इनसाइड functions. So if we talk about the inside functions, then there is a we can say constraint. We can define small functions in the क्लास बॉडी, है ना. ज्यादा बड़े फंक्शंस और ज्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हम क्लास के अंदर डिफाइन नहीं करते, है ना. देयर विल बी स्मॉलर फंक्शंस. एंड वन थिंग मोर, if you define any function in the class, or we can say make any function in the class body, then that function automatically treated as inline function. यानी क्लास बॉडी के अंदर बनाए गए सभी फंक्शन इनलाइन होंगे बाय डिफॉल्ट. उनके साथ आपको इनलाइन कीवर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है. देयर इज नो नीड ऑफ द कीवर्ड इनलाइन. ओके, that will be the statement treated as inline function automatically, and there no need of special label for that particular function.
जैसा फंक्शन आप सी लैंग्वेज में डिक्लेयर करते थे ठीक वैसे ही करना है। हमें कुछ भी उसके अंदर क्लास के लिए या कुछ भी लेबलिंग नहीं करनी। देयर इज नो नीड ऑफ क्लास नेम अगर आप फंक्शन को अंदर बना रहे हो। वी टेक एन एग्जांपल इन नेक्स्ट स्लाइड। Okay, so we already talk about inline function, and that is two statements are for inline, how the inline works. Inline means we can say it is hint for the compiler that the code must be inserted as at the uh, place of call the function. Okay. Let us consider an example in reference of member functions inside the class. So there will be a class with name name. Name is the class of name. ठीक है? Class का name मैंने क्या रखा है यहाँ पे? Name रखा है. Okay. Then there will be a no variable here, only a function, and function name is display name. Okay, you can just declare only display, or you can show, you can any identifier you have to use, जो भी आप यूज करना चाहें. Here will be the example, sorry, the message see out के अंदर एक मैसेज दिया गया. यहाँ पे एक कमेंट है, देखो इसको रीड करो. मेंबर फंक्शन डिफाइंड इन द क्लास इज बाय डिफॉल्ट इनलाइन. हमने यहाँ पे इनलाइन वर्ड यूज नहीं किया है, बट इट विल बी द इनलाइन बाय डिफॉल्ट. ओके, तो ये हमने यहाँ पे फंक्शन जो है वो क्लास बॉडी के अंदर बनाया है. यहाँ हमने क्लास को क्लोज किया है. दैट विल बी द क्लास. In main function, we will declare a object and call that particular function with object. That is already discussed in previous lecture. Object creation and member function call. Member function outside the class. Whenever we need to define them outside the class, then we will declare the function inside the class. सर प्रीवियस वाली स्लाइड एक बार दोबारा समझाना. बताओ बेटा क्या नहीं समझ में आया इसमें. इसमें जो अपने फंक्शन बनाया ना मेंबर फंक्शन, ये इनलाइन कैसे हो गया ऑटोमेटिक? पिछला लेक्चर अटेंड किया था आपने. यस सर. देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? फंक्शन आपने सी में जो यूज करते हैं वही फंक्शन है. आप इस फंक्शन को अदरवाइज मत देखो. क्या आपने सी लैंग्वेज में इससे डिफरेंट कुछ किया है फंक्शन डिक्लेयर करने में? नो सर, आई सेम थिंक एज नो, इट इज सेम. तो यहाँ डिफरेंट क्या है? बस हमने क्लास के अंदर रख दिया इसको. देन व्हाट इज द डिफरेंस? सर ये जैसे पब्लिक लिखा है ना सर अपन ने, ये देखो, that will be the access specifier, and I already told in previous lecture, these are the access specifier we have to use for accessing these code, है ना. outside access की permission के लिए हम use करेंगे. so पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. अगर आपने नहीं लेक्चर अटेंड किया देन यू हैव टू एक्सेस वीडियो ऑफ आवर लेक्चर, है ना, फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट टीम, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड. बिकॉज ऑफ हम हर प्रोग्राम के अंदर प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड को डिस्कस नहीं कर पाएंगे बेटा, क्योंकि वी हैव लिमिटेड टाइम, है ना. आई ऑलरेडी conduct I think one whole lecture on these access specifier and class body. So please go through from that particular lecture, or I had also shared the PPT with all of you on the Google Classroom. So please once go through from these content.
पब्लिक मीन्स एक बार मैं बता देता हूँ, चलो आपने जब पूछ लिया तो पब्लिक मीन्स वी कैन से यू कैन कॉल दैट पर्टिकुलर फंक्शन आउटसाइड द क्लास। अगर यहाँ हम पब्लिक लिख देते तो ये स्टेटमेंट हम यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे आप इस फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते अगर आप यहाँ पे प्रोटेक्टेड और प्राइवेट यूज करते हो तो। दैट्स व्हाई वी नीड द पब्लिक। अगर कुछ भी यूज नहीं करते तब भी बाय डिफॉल्ट प्राइवेट हो जाता और हम इसको यहाँ पे कॉल नहीं कर पाते, इसलिए हमने इसको पब्लिक डिफाइन किया। ओके, क्लियर? यस सर। सो एक तो क्लासेस में रेगुलर रहें, क्या है कि ये सब चीजें जब एक लेक्चर आप मिस कर देते हो ना, दीज आर ऑल इन सीक्वेंस एंड कनेक्टेड टू ईच अदर। अगर आप मिस करते हो देन यू मस्ट फेस प्रॉब्लम इन अपकमिंग लेक्चर्स, नॉट ओनली वन लेक्चर, इन हॉल लेक्चर्स। अगर आप एक लेक्चर मिस करते हो तो आपको कई लेक्चर तक उसको फेस करना पड़ेगा। So, if we talk about outside definitions, then we must declare these functions in the class. Okay, and the function definition will be at outside the class. In particular syntax, we can understand a return type that will be used in all functions, and you all familiar with that. Only then, yes. Someone want to ask something? Okay. The only difference is this. Only हमें class का name इसके अंदर use करना है. And we had discussed about scope resolution operator in previous lecture. That will be also included here. Okay. So that will be the difference only. We will take an example in next slide. What is the role of these particular things, class name and scope resolution operator. So we will discuss it, and there will be the class name is indicate the function belongs to that particular class, है ना। हम क्लास नेम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि पता चले हमें, क्योंकि देयर इन सी प्लस प्लस प्रोग्राम देयर विल बी मल्टीपल क्लासेस ऑल्सो। हम एक ही प्रोग्राम में मल्टीपल क्लासेस भी यूज करेंगे। देन अगर सभी के फंक्शंस हम आउटसाइड डिफाइन करते हैं, देन व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन दैट व्हाट फंक्शन बिलोंग्स टू विच क्लास। That's why we need to define the name of the class with the function. And the scope resolution operator provides the scope for that particular function of the class. So we will understand it by using function or by using code. That's why we need a better understanding. Here, the same class that we have discussed in previous example of inside member function. अब देखो पिछले में हमने क्या किया था, क्लास यहां बंद हो रही है, ध्यान रखना, ठीक है, और फंक्शन जो है वो क्लास के अंदर बना हुआ है। बट यहां पे हमने क्या किया है, केवल हमने फंक्शन का नेम लिखा है, फंक्शन की बॉडी यहां पे नहीं है, और हमने क्लास को बंद कर दिया। बाकी चीजें क्लास के अंदर सेम है। इसको हम क्या बोलेंगे, मेंबर फंक्शन डिक्लेरेशन। ओके, and then we will talk about the function definition that will be the outside of the class.
इसमें और इस वाले फंक्शन में केवल आपको एक ही चेंज मिलेगा, और वो क्या मिलेगा, यहाँ पे void display name और यहाँ पे भी है void display name, बट ओनली ये चीज यहाँ पे चेंज है। You have to add the name of the class with scope resolution operator. Okay, only the difference. You can declare the functions as your requirement in the class body, and then you can define all these functions using class name and scope resolution operator. बाकी कोई चेंज नहीं होगा, कॉलिंग के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, मेन फंक्शन विल बी सेम, there is no change. Only the change is that you will define the function outside the class and declare these particular function inside the class, and whenever you define the function you must use the name of the class along with scope resolution operator. It is the clear all of to all of you? Yes or no? Yes, sir. Okay, that's the good. Then outside member functions as inline. देखो, जो क्लास बॉडी में फंक्शन हम डिफाइन करते हैं, दीज आर ऑटोमेटिकली इनलाइन, बट आप क्लास से बाहर डिफाइन कर रहे हो और उसको आप इनलाइन बनाना चाहते हो, देन देयर विल बी ए वे टू मेक inline these function. You will add only inline keyword with that particular function, है ना, यानी यहां void से पहले आपको inline ऐड करना है ओनली, ठीक है। बाकी चीजें सेम रहेगी, इसके अंदर वही सब चीजें बताई गई है कि आप ओनली छोटे प्रोग्राम्स के जो कोड है उनके साथ यूज कर सकते हो, लार्ज कोड के जो प्रोग्राम्स है उनके साथ आप यूज नहीं कर सकते, और वही कंपाइलर उसको मेनली कोड को रिप्लेस करता है, और these all things we already discussed in inline function or in very first slide of our today's section, है ना। वैसे इनलाइन फंक्शन का अलग से टॉपिक आपके सिलेबस स्कीम में था नहीं, बट मैंने ऐड कर दिया ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए, है ना। दैट विल बी एक्स्ट्रा thing added in that particular lecture. So you can see the same example, only the keyword added as inline. Okay, बाकी पूरे कोड के अंदर कोई चेंज नहीं है, both code are same, that and that. Okay, assigning member function, accessing member function within the class. So I think we already discussed about this, but uh, we, we will discuss again. If you need to call a function that will be defined in your class and you need to call in that particular class, then there will be no problem. वो चाहे प्राइवेट हो, पब्लिक हो, चाहे प्रोटेक्टेड हो, यू कैन कॉल दैट। इसका हमने डेमोन्स्ट्रेशन भी देखा था जब मैंने क्लास आपको पढ़ाई थी, और मैंने आपको पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट के बारे में जब बताया था, एक्सेस स्पेसिफायर हमने जब डिस्कस किए थे, उस टाइम मैंने आपको ये सेम एग्जांपल विद डेमोन्स्ट्रेशन बताया था। ओके, so there will be a access specifier private, so the both variables are private, and the member function read also in category of private. So all that property
is private property of that particular class. It means we can't access anything from this box outside the class. क्लास के बाहर हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। आप देख सकते हो मेन फंक्शन के अंदर कहीं भी आपको लेंथ, ब्रेथ और रीड फंक्शन का कोई भी कंटेंट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, बिकॉज वी डोंट एबल टू access them outside the class. Then next one is the public, and it is the public property of this particular class that will be accessed easily outside the class. आप एरिया को भी बाहर एक्सेस कर सकते हो और आप दैट पर्टिकुलर रेक्टेंगल फंक्शन को भी आप बाहर एक्सेस कर सकते हो, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे रेक्टेंगल को कॉल किया गया। But here you can see the function read also called by the function rectangle. It can't access from outside the class, but it can be accessed inside the class by using this area. So that will be the function call, access function within the class. Now we already discussed about this. Okay. Array of object. It is the last topic of our first unit. So we will complete this, and then we will conclude our session, and we can say whole unit. So in C++, you can use array in your class as particular simple variables, or you can use array as objects also. It means you can say you can uh, use array of all types. All type means you can use the array of integer type, you can use array of character type, float type, or you can array also of class types. And I especially mention class type. Class type का जो array होगा, that will be known as array of object. है ना? डिफरेंस क्या होगा? अगर आप इंटीजर टाइप का एरे डिक्लेयर करते हो, देन दैट इज द प्रोसेस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एरे, array name and then size of the array. You all know about that particular declaration. Okay. And whenever we need to declare array of objects, then we have to use the name of the class at the place of data type only the difference. According to previous example here, what is the name of class? That will be the area. If we need to declare the object of array for that particular class, then we write the data type as area, and then we declare an array with the size as we required. So it is the array of objects. I think there is no confusion to anyone, because of whenever we declare simple object, we have to use a class name as data type. जब सिंपल वेरिएबल को हम क्लास नेम से डिक्लेयर करेंगे, तो हम एरे को भी क्लास नेम से डिक्लेयर करेंगे. That will be the known as array of objects. Clear? Declaration is clear to all of you? Yes or no? Yes, if sir. there is okay, if there is any problem, you can ask.
and then we move some another points. What is the, we can say, representation, or what is the storage methodology of these particular arrays. So we can say these arrays are work as multi-dimensional arrays. Why the multi-dimensional array? Okay. At particular example, you can see in this example there will be the some variables. We can say name of name नाम का एक वेरिएबल है, that will be the of maximum 10 character, and एक integer type का age variable, and there will be a function defined in public scope. नेम आपने इनपुट किया है, एज आपने इनपुट किया। अब मान लो यहाँ पे हमने एक एरे डिक्लेयर किया है एम्प्लॉय मैनेजर्स का। सो इट इज द एरे, है ना। मैंने यहां से स्टार्ट किया, ये ऑब्जेक्ट्स का एरे हमने बनाया जिसका नाम क्या है, मैनेजर। ठीक है, मैंने एम लिख दिया, और ये टोटल साइज कितनी है, 3। इट मीन्स द इंडेक्स नंबर इज 0, 1 and 2. That's all. Okay. Then here the variable is I. So I will take the I, and what is the initial value of I? That will be 0. Okay. Condition must be checked. तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग में देख लेते हैं कि I की वैल्यू जब तक 2 होगी तब तक लूप चलेगा। इट मीन्स यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। बार बार हमें कंडीशन के ऊपर प्रोसेस करने की जरूरत नहीं। So next, what is the body of the particular loop? Enter the manager's detail. I यहाँ पे 0 रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। 0 यानी जो फर्स्ट लोकेशन का जो मैनेजर है उसकी डिटेल हमें इनपुट करनी है, और हमने फंक्शन कॉल किया है कौन सा इनपुट के लिए, गेट डेटा। दैट विल बी द पर्टिकुलर फंक्शन जो हमने क्लास में डिफाइन किया। अच्छा, इसके अंदर हम क्या क्या इनपुट ले रहे हैं, नेम इनपुट ले रहे हैं, और हम एज इनपुट ले रहे हैं। तो नेम हम किस में इनपुट ले रहे हैं, एक एरे है कैरेक्टर का 10 का। सो वी आर ऑल्सो डिक्लेयर्ड ए एरे ऑफ 10 characters 0 to 9, and you have to store the name in this particular array, and then age also here a location for age, and you have to input the age in that particular location। जब I की वैल्यू 1 होगी तो ये काम आप इसमें भी करोगे, I की वैल्यू 2 होगी तो ये काम आप इसमें भी करोगे, ठीक है। Now we need to display the information of these employees. So we need to loop from 0 to 2। यहाँ से यहाँ तक तो हमें चलना ही पड़ेगा, तभी तो हम डिटेल डिस्प्ले करवा पाएंगे। And we have to call the function put data. That will be the function made in class body. So we have to access the name and you have to access the age. So here these values accessed by us. हम इसको डेमोन्स्ट्रेशन से भी देखेंगे, सेम प्रोग्राम को, यही सेम प्रोग्राम। एंड देयर विल बी द ओनली सिंटैक्स। तो सिंटैक्स तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम और साइज, एंड दैट विल बी द
सिंटेक्स ऑफ एक्सेसिंग, है ना। आप इंडेक्स नंबर के साथ जैसे नॉर्मल एरे को आप एक्सेस कर सकते हो वैसे ही कर सकते हो ना। डॉट लगाकर मेंबर फंक्शन, है ना। हमने यहाँ पे देखो डॉट लगा के मेंबर फंक्शन एक्सेस किया है, और यहाँ पे भी हमने डॉट लगाकर मेंबर फंक्शन एक्सेस किया। ओके, आई नीड टू move on demonstration because of our, okay, that will be the syntax. And it is a program, we can say it is a class, वही है सेम जो अभी हमने स्लाइड्स के अंदर देखा था, है ना। these are the both of are same. Okay, there are two variables, name and age. These are private, and the public, in public there are two member functions, get data and put data. Get data for input the detail in form of name and age for the employee or for the manager, and put data is used to display the detail of manager or print the detail of manager. And here the main function, first we declare a object, or we can say array of object, that is the name of manager with size 3. जैसे ही हम ये डिक्लेयर करेंगे, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होते ही मेमोरी के अंदर स्पेस ऑक्यूपाई किया जाता है। तो जैसे हमने डिक्लेयर किया, नेम के लिए स्पेस ले लिया, एज के लिए स्पेस ले लिया, नेम के लिए, ये कितनी बार किया जाएगा, जितने आपके एरे के लोकेशन हैं। तो एरे साइज 3 थी, यहाँ पे देखो 3, मैनेजर ऑफ 0, मैनेजर ऑफ 1 एंड मैनेजर ऑफ 2, और टोटल 3 स्लॉट्स यहाँ पे बन गए। और वेरिएबल यहाँ पे नेम है, एज है, तो सभी के अंदर नेम और एज अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर चुका है। देन वन अनदर वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर that will also take space in memory whenever it is used. ठीक है, तो ये I equal to 0 यहाँ पे मेनली शो किया जा रहा है। ठीक है, so there will be the loop, condition tested, condition is true, and the message is displayed on the console screen, and the function is called for 0 location of the array. So the message is displayed, enter the employee name, then input. So I will enter the employee name, just like Ankit. So the Ankit is entered in that particular space, and the age of Ankit, I will say that will 20-year-old. It is also entered. You can see these, है ना, एज भी इनपुट हो गया और नेम भी हो गए। और जैसा कि हमने स्ट्रिंग में बात की थी, ऑटोमेटिकली नल कैरेक्टर आता है, तो अंकित के बाद देखो ऑटोमेटिकली नल कैरेक्टर यहाँ पे स्टोर हो गए, है ना। देन द डिटेल ऑफ नेक्स्ट, next time it will be the loop is executed, I equal to 1, condition checked, condition is true. Okay, 1 is less than 3, that's why it is true. And then function calling, so enter the name of another employee. So that is Pankaj, and the Pankaj is entered, and the age of Pankaj, I can say that will be the 21-year-old. Okay. Now again the increment I plus plus,
तो आई की वैल्यू अब हमारे पास 2 हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे हम कंडीशन चेक हमने की और नेक्स्ट हमने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया, देन द नेम ऑफ थर्ड एम्प्लॉय सी इन एग्जीक्यूट होगा एंड सी इन आई थिंक रिया, and the age of Ria we have to input. So the message is displayed from C out, and then the C in executed in form of, we can say that is 9. Okay, so all details are entered. Then you can see the I equal to 3 now, and whenever we check the condition, so 3 is not less than 3, the condition is false और हम array से बाहर निकल जाएंगे. Now the code for display, okay, so यहाँ पे भी 3 बार loop execute होगा from 0, start from the 0, condition will check 0 is less than 3, okay, 0 is less than 3, and the function is called by the object that will be the function, so the detail is inputted here. ना आप देखते जाओ ऑटोमेटिकली सारी डिटेल जो है वो फेच की जाएगी, ओके। फर्स्ट अंकित and age of Ankit is 20, and then I की वैल्यू 1 हो गई, and you can see the next employee detail. Employee name is next one Pankaj, and the age of Pankaj is 21. Okay. Now the value of I is 2, and the condition is 2 is less than 3, it is true, and then the data is called, and data fetched from the that particular function, name is Ria, and the age is 19. Condition is, now the condition is false, 3 is not less than 3, so the our code is complete. Okay, so that will be the all about object of array of object.